Hello, am I audible? Okay. So we'll be starting in 2 minutes. Okay, so today's topic is Gauss Divergence Theorem, and today's we are going to start with a statement of it one. It so in a simple words, what can I write? Let us suppose we have f is a vector point function such that f vector is equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap having continuous first order partial derivatives in the region V, bounded by closed surface capital S, then the volume integral triple integral V del dot F into dV is equal to surface integral of F vector dot n cap into ds, where n cap is the outward drawn unit normal vector to the surface capital S. So this is the basically statement. It is a basically I can say it is a relation between surface and volume integral. Okay, so for double integral integral we have a relation, and that is said to be Gauss divergence theorem. Okay,
So if any one of you have a doubt, you can text me on my WhatsApp number so I can discuss that problem. Okay. Now coming to the question, I have a question right now written on the board that we have to use divergence theorem to evaluate this surface, this one. Okay, this is a surface and it is being bounded by this one. Now this is equation of sphere. X square plus y square plus z square is equal to a square. That is equation of sphere with center at origin and radius as a and z equal to 0. Okay, now we will be trying with this question now. So first of all, excuse me, solution for this one now. Now what we are having? We are having surface integral s of f1 dy dz plus f2 dz and dx plus f3 dx and dy. That is equal to what? Basically it is your given statement, x z square dy dz plus x square y minus of y cube dz dx plus 2xy plus y square z dx and dy. Now if I compare, the coefficient of dy and dz is what? dy is this one. So that means f1 is your value x z square. Similarly f2 will be this part, x square y minus of y cube, and the third one, that is this one, that will be your f3. f3 will be 2xy plus y square of z. Okay, so this is basically the value of f1 and f2, f3. So therefore we can write your f factor will be equal to x z square I cap plus x square y minus of y cube j cap plus 2xy plus y square z into k cap. That is basically your f factor. Okay, now by Gauss divergence theorem, we know that the surface integral S f vector dot n cap into ds, that will be always equal to the volume integral of divergence of f vector into dv. So now I need to solve this part. Okay, so what is the first step? For the first step will be to find this value. For this one we need first of all divergence of f. Now divergence of f basically means curly by curly x of f1, or I can write it in the complete form. It will be curly by curly x I cap plus curly by curly y j cap plus curly by curly z k cap dot f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. And I know that whenever we are having dot product, I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1. So that means curly by curly x of f1 plus curly by curly y of f2 plus curly by curly z of f3. So that means curly by curly x of f1, that is x z square, curly by curly y of f2, that is x square y minus of y cube, plus curly by curly z of 2xy plus y square and z. Okay, now curly by curly x of this part will be what? That will be z square plus, for this one it will be x square minus of 3 y square, and for the last it will be 0 plus y square.
Okay, so it counts to be this x square minus 3y square plus y square. Anything else? It will be x z square, yes, then x square y minus of, just a minute, I'll check the statement. The statement is, here the statement is, it will change, it will be z cube, it was z cube, z cube. So this will not be working there. So it will be x square plus y square plus z square. This is the value of divergence of f factor. Okay. So I'm now going to substitute in this equation number 1. Therefore, equation 1 reduces to the surface integral S f factor dot n cap into ds, that will be equal to the volume integral of x square plus y square plus z square into dv. dv means dx, dy and dz, and this dx, dy, dz is what? That is basically a sphere. X square plus y square plus z square is equal to a square semicolon z equal to 0. That means the upper half semicircle. Okay. So whenever we are going to use a sphere, what we use? We use a property of spherical polar coordinates. So using spherical polar coordinates, I need to substitute x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z equal to r times cos of theta. Okay, such that dx, dy and dz, that will be equal to what? That will be equal to r square sin theta dr, d theta and d phi. So now this integral, this equation number 2 reduces to surface integral f factor dot n cap into ds, that is equal to volume integral. So when we are talking about this one, so the limits will be, so limits of r varies from 0 to the radius of the sphere, theta will vary from 0 to pi by 2, and phi will varies from 0 to 2 pi. Okay, so I'm writing limits of phi outside, 0 to 2 pi, then 0 to pi by 2, and the last 0 to a of this part x k plus y square plus z square. Now the when we are taking x k plus y square plus z square, that is always to the r square into, now dx, dy, dz and dz, that is equal to this part, that is again r square sin theta dr, d theta and d phi. Okay, so the values comes out to be 0 to 2 pi, 0 to pi by 2, integration of r square into r square, r4, integration of r4 will be r5 by 5 within the limits 0 to a into sine of theta d theta and d phi, that will be is equal to 0 to 2 pi, 0 to pi by 2, this 1 by 5 I am taking out common, a raised to power 5 into sine theta d theta and d phi. So this a raised to 5 also to be taken out common over 5, 0 to 2 pi, 0 to pi by 2 sine theta d theta and d phi. Okay, now integrating this one, integration of sine theta will be minus cos of theta, so it will be a raised to 5 by 5, 0 to 2 pi, that will be minus of cos of theta within the limit 0 to pi by 2 and d phi.
minus a raised to 5 over 5, 0 to 2 pi. So it will be cos of pi by 2 minus cos of 0 into d phi. Now cos 90, that will be 0 minus cos 0 1 into d phi. So that comes to this minus 1 into minus, that will be positive part, a raised to 5 by 5 integration 0 to 2 pi of d phi, and d phi that comes to be phi. It will be a raised to 5 by 5 within the limits 0 to 2 pi. So it will be 2 pi a raised to power 5 by 5. That is the answer of this question. Hope it is clear to everyone. Okay, so next question, one more question from the same context, that I am taking the case of tetrahedron because it is a very important topic. Tetrahedron, or we can say cubical box, these two are the very important topics. Sure, Shika, you need to understand the value of dx, dy and dz. Okay, so when I am talking about these values, this step is basically the value of f, divergence of f. This is the value of dv. Okay, dv is basically dx, dy, dz, and we have to work this dx, dy, dz, that is the volume until this one. This is given in the statement. Now this is the basically standard rule for spherical polar coordinates. Okay, so for this one, what we have x is equal to r sine theta cos phi. You need to remember these values. Okay, it will be standard always. Y is equal to r sine theta sine phi, and z equal to r cos theta. So r varies from 0 to a, theta varies from 0 to pi by 2, and phi varies from 0 to 2 pi. Okay. So dx, dy, dz equal to basically r square sine theta, dr, d theta and d phi. These are the standard values which you need to remember. So basically catch to your memory. Okay, you need to remember these values. Now when I am using these values in equation number 2, so this value will remain as it is. I have written over here. Now coming to the limits, so this will be the constant. I have kept this as the extreme outer side. This will be the middle limits, and this will be the interior limits. Okay, so 0 to 2 pi, 0 to pi by 2, 0 to a. Now the value of xk plus ysk plus zk, when you are scaling these three terms and adding, scaling and adding, so you always get the value as r square. Okay, that is a standard value. Now dx, dy, dz, that has a result r square sine theta, dr, d theta, d phi. So I have written this term as it is. Okay, now r square into r square, that will be r4, and integration of r4 will be what? That will be r raised to 5 over 5 within the limit 0 to a, sine theta as it is, d theta as it is, and d phi as it is. Okay, so upper limit minus lower limit, r raised to power 5, that means a raised to 5 by 5. I have taken 1 by 5 outside. Sine theta, d theta, d phi. Now integration of sine theta will be minus cos theta. So that will be upper limit minus lower limit. So I have taken, first of all, I have taken this negative sign outside the bracket. Over here I have mentioned this thing. Now cos pi by 2 minus of cos of 0, that is equal to into d phi. Cos 90, I know the value of cos 90 is always 0 and cos 0 is always 1. Okay, 0 minus of 1, that is minus 1. This minus 1, this minus 1 cancelled out, and we get the positive value a raised to 5 over 5 within the limit 0 to 2 pi d phi. Integration of d phi will be 5 within the limit 0 to 2 pi. So upper limit minus lower limit, so our net output will be 2 pi a raised to 5 by 5. That is your final answer. Okay. Now I have done this question for basically a sphere, a hemisphere. Okay. It can be a complete sphere. It can be any three-dimensional figure. Okay. This is a standard value that I have taken. Now coming to the next question, that is a question of tetrahedron, and question is basically evaluate surface integral f vector dot n cap into ds, where f vector is equal to x square plus y square plus z square into I cap plus j cap
plus k cap. S is the surface of tetrahedron. Now tetrahedron, it may be given to you the equation of tetrahedron. Otherwise, it is a very standard equation. That means x is equal to 0, y is equal to 0, and z equal to 0. These are the basic three axes, and this is x plus y plus z is equal to, it can be any numerical value. Okay, so I'm taking it for a numerical value 2. It can be 4, it can be 1, it can be any value. And n cap is the unit normal in the outward direction to the closed surface capital S. Okay, this is basically the statement. Now I have given the value of f factor. So if I want to write it in proper manner, it will be x square plus y square plus z square into I cap plus again x square plus y square plus z square into j cap plus x square plus y square plus z square into k cap. That is basically the value of f factor. Okay, now using Gauss Divergence Theorem, surface integral f factor dot n cap into ds, that will be equal to the volume integral of divergence of f factor dot n cap, divergence of f factor into ds, dv into dv. Okay, so for this one, I first of all need to find the value of divergence of f. So divergence of f factor will be equal to curly by curly x I cap plus curly by curly y j cap plus curly by curly z k cap dot x square plus y square plus z square I cap plus x square plus y square plus z square j cap plus x square plus y square plus z square k cap, and dot product between the two. So I know the values, that I dot I1, j dot j1, k dot k1. So that comes to be curly by curly x of x square plus y square plus z square plus curly by curly y of x square plus y square plus z square plus curly by curly z of x square plus y square plus z square. Okay, so curly by curly x of this part will be 2x, for this one it will be 2y, and for third one it will be 2z. I am taking 2 common, so it comes to be 2 times x plus y plus z. Okay, now coming to the surface. Now the surface, given surface is this one, x plus y plus z is equal to 2. Now given surface is x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, and x plus y plus z is equal to 2. Now keep one thing in mind, always start from the back side, that is z. So z will be equal to 2 minus of x minus of y. That means z is varying from z equal to 0 to z is equal to this part. And now when I have calculated the value of z from this term,
So you need to substitute this value as 0. So it will be x plus y plus 0 is equal to 2. So that means x plus y is equal to 2. So y is equal to 2 minus of x. Okay. And the third part is x plus 0 is equal to 2. So that means x is equal to 2. So what were the variations? X will be varying from 0 to 2. Y will be varied from 0 to 2 minus of x. And z will varies from 0 to 2 minus of x minus of y. So these will be your limits. Okay. Therefore, surface integral f vector dot n cap into ds will be equal to volume integral, that is I am taking the value of x 0 to 2, then 0 to 2 minus of x, then 0 to 2 minus x minus of y into the term divergence of v, that is 2 times x plus y plus of z into dz, then dy, and then dx. I think so. Step is clear to everyone. Okay. Now, coming to the next part, 2 is constant, so I will take it common. 0 to 2, 0 to 2 minus of x. Now I need to take integration with respect to z. Okay, so when I'm taking to integration with respect to z, so it will be xz plus yz plus z square by 2 within the limits 0 to 2 minus of x minus of y dy and dx. So it will be 2 times 0 to 2, 0 to 2 minus of x. Now here z is common, so I can take x plus y common into z plus z square by 2, 0 to 2 minus of x minus of y into dy and dx. Okay, I think so. It is clear to everyone till this step. Now upper limit minus lower limit, 2 times 0 to 2, 0 to 2 minus of x, x plus of y, upper limit. So it will be 2 minus of x minus of y minus lower limit 0 plus this 1 by 2 as it is into 2 minus of x minus of y whole square minus of 0, and then we have dy and dx, 4 bracket close. So it will be 2 times 0 to 2, 0 to 2 minus of x. Now I need to open the bracket, so it will be 2x, then minus of, we can write 2y, 2x plus 2y minus of x square, then minus of xy, minus of xy, minus of y square, plus half of 2 minus of x minus of y whole square dy and dx. Now just check, is there anything going to cancel out or not? 2 times 0 to 2, 0 to 2 minus of x. So the output will be what? Output will be 2x plus 2y minus of x square minus of y square minus 2xy plus 1 by 2, 2 minus of x minus of y whole square dy and dx. Okay. Now I just need to integrate respect to y. That is my last step for second last step for this part. 0 to 2. So 2xy plus 2y square by 2 minus of x square y minus of y cube by 3 minus 2x y square by 2 plus 1 by 2. Now integration for this part will be 2 minus x minus y whole cube over 3 into coefficient of y, that is minus 1.
into dx within the limits 0 to 2 minus of x. This 2 and 2 cancel out, this 2 and 2 cancel out. Okay. सेकेंड क्वेश्चन में जो हमने लिमिट्स निकाली हैं उस स्टेप से एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ. ओके, आई थिंक सो टिल लिमिट्स एवरीथिंग इज क्लियर. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से. सो गिवन स्टेटमेंट में था x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0. मैंने यहाँ से लास्ट वैल्यू ली z इज इक्वल टू 2. ये दोनों टर्म्स में उधर लेके गया हूँ. ठीक है, 2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y. So that means z की वैल्यू जो जाएगी that will be z from 0 to 2 minus of x minus of y. जिसकी वैल्यू निकाल ली उसको हमने एलिमिनेट कर देना है. उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर लो या एलिमिनेट कर दो. ठीक है, वन एंड द सेम थिंग इस इक्वेशन के इसके अंदर स्टार के अंदर. So x plus y is equal to 2 now. So that means y is equal to 2 minus of x. तो y की वैल्यू वेरिएशन जाएगी 0 से लेकर 2 minus x. 0 ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है. अब x z भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, दोनों को एलिमिनेट करना है इसी स्टेटमेंट स्टार में से. तो y और z दोनों को एलिमिनेट किया, मेरे पास रहेगा अकेला x इज इक्वल टू 2. तो x की रिलेशन चलेगी 0 से लेकर 2 तक. ठीक है, तो यूज करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस s f dot n cap ds is equal to limit constant limit outside 0 to 2, then limits of first dependent 0 to 2 minus of x, that is y, and 0 to 2 minus of x minus of y, that is the limits of z, into divergence of f dz dy and dx. ठीक है, तो मैंने इंटीग्रेशन करनी है रिस्पेक्ट टू z. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x की आगे xz, y की आगे yz, z का आगे z स्क्वायर बाय 2 within the limit 0 to 2 minus x minus of y. Okay, now upper limit after that I have just taken x here xz and yz, that means z is common in both of the terms. So x plus y common, z as it is, z को मैंने बाहर निकाल दिया. x plus y into z plus z square by 2 0 to 2 minus x minus of y. अब मैंने सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर की टर्म की और ब्रैकेट्स एक्सपैंड की है. ठीक है, ये वाली टर्म को पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म को मैंने माइनस y से मल्टीप्लाई किया. इस चीज की इंटीग्रेशन मैंने जब ली है तो उसमें क्या किया, 2 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो क्यूब होगा दैट विल बी इक्वल टू रेज टू पावर 3 ओवर 3 इनटू कोफिशिएंट ऑफ y. क्या कितना है उसका कोफिशिएंट, दैट इज माइनस ऑफ 1. सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, 0 टू 2 2xy प्लस y square minus of xy square minus of y cube by 3 minus of xy square 3 into 2 minus 1 by 6 2 minus x minus y whole cube within the limits 0 to 2 minus of x, and then we have dx. Okay, now I need to substitute the limits. So 2x so now it will be 2y. Y is what, 2 minus of x plus 2 minus of x whole square minus of x 2 minus of x whole square minus of 2 minus of x whole cube by 3 minus of x into 2 minus of x whole square minus 1 by 6 2 minus of x minus of 2 minus of x and d of x. Okay, so that counts to be 2 times 0 to 2 2x into 2, that will be 4x minus of 2x into x 2x square plus, now I need to expand this bracket, 2 minus x whole square, it will be 4 plus x square minus of 4x minus of x 4 plus x square minus of 4x minus of this 2 minus of x. I am not going to solve it because it will make a typical values minus of x. Now this part and this part both are the same, so I am making 2 times. Okay,
minus 1 by 6. So when I expand this bracket, so it will be 2 minus of x minus 2 and plus of x, then d of x. This 2 and this cancelled out. After all, at the end what I am getting, 2 times 0 to 2, this 4x minus of this 2x square, okay, 1x square is this one, and I need to expand all the brackets. So 4x, this is 2x square plus 4 plus x square minus of 4x minus 4 to the 8x minus 2x cube plus 8x square minus of 2 minus of x whole cube by 3 into d of x. Okay, so the result for these value will be 2 times 0 to 2 when I solve all the result. So it will be 2 minus of x whole square minus of 2 minus of x whole cube by 6 and dx after solving the above equation. Okay, so it will be 2 times, now I need to integrate these values, so it will be 2 minus of x raised to power cube by 3 into coefficient of x, that is minus 1, minus of 2 minus of x whole cube over 6 into 4 into coefficient of x, that is minus 1, within the limits 0 to 2. So it will be 2 as it is, 2 minus of x whole cube by minus 3, minus minus plus 2 minus of x is to power 4 over 6 4s are 24 within the limits 0 to 2. Now you just need to substitute upper limit minus lower limit, you will be getting the final result. So 2 substitute कर रहा हूँ, 2 minus of 2 0 plus again 2 substitute कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 minus of 2 0, that is the upper limit minus lower limit. So 2 minus of 0, that is 2, 2 cube will be 8, 8 by minus 3 plus 2 minus of 0, that will be 2 raised to a 4, that will be 2 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, 16 by 24, and the net result what I am getting for this one, that times, that will be 4, 2 times minus and minus, it will be 8 by 3 minus 16 by 24. So 2 times 8 by 3 minus 2 by 3, so it will be 2 times 6 by 3, 2, 3 2 is so 2 2 is 4. So 4 will be the final answer for this question. Okay, hope it is clear to everyone. This is one of the important question. Okay, one more question from this same concept. I'm just explaining the question, not doing that one. Same topic, use Gauss Divergence Theorem to find surface S, x dy dz plus y dz dx plus z dx dy, where S is the portion of the plane x plus 2y plus 3z equal to 6 in first octant. Same question, this is the value of f1, this is the value of f2, and this is the value of f3. Now this is the plane given to you, and first octant, that means we have to use x from 0 to something, y 0 to something, and z 0 to something. Okay, so you can calculate the value of z from this part. It will be 3z is equal to 6 minus of x minus of 2y, or we can say z is equal to 1 by 3, 6 minus x minus of 2y, z we have done. So x plus 2y is equal to 6. So यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2y is equal to 6 minus of x, और y is equal to 6 minus of x by 2. x z और y दोनों निकाल लिए तो मुझे रह गया x की वैल्यू, x is equal to 6, तो x की वैल्यू जाएगी 0 to 6, y की वैल्यू जाएगी 0 to 6 minus of x by 2, and z की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर 1 by 3 times 6 minus of x minus of 2y.
ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन सेम है. So this was something about divergence theorem. Now if I come to Green's theorem, ग्रीन्स की जगह मैं पहले स्टोक्स करवाया था बिकॉज दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. सो स्टोक्स थ्योरम के अंदर है from my end voice is full. So now Stokes theorem, that is also one of the important question theorem. So in Stokes theorem what we are having, if S is an open surface bounded by closed curve C, bounded by a closed curve C, and f vector be any vector point function having continuous first order partial derivatives, then the line integral along the curve C f dot dr is equal to surface integral curl of f dot n cap into ds, where n cap is the unit normal vector at any point of S, okay, drawn outwards basically. Excuse me. So basically it is a relation between single integral and double integral. That means line integration with a surface integral. Okay. Coming to a question for this one now. Saying I am taking a hemisphere question. So question is, use Stokes theorem to evaluate line integral v dot dr, where v vector is equal to y square I cap plus xy j cap plus xz k cap, and C is the bounding curve of hemisphere x square plus y square plus z square is equal to 9, z is greater than 0 in positive direction. Okay. So first of all what we have to do, so using Stokes theorem, we know that line integral v dot dr is always equal to the surface integral of curl of f dot n cap curl of v dot n cap into ds. ठीक है, एज पर स्टेटमेंट यहाँ पे v है तो v यूज करूंगा, f है तो f यूज करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द कर्ल v. नाउ कर्ल ऑफ v वेक्टर, दैट मीन्स determinant of I cap, j cap and k cap, curly by curly x, curly by curly y, curly by curly z. So v I cap का coefficient है y square
xy and xz, determinant of this one. So if I calculate determinant I cap, that counts to be curly y of xz minus of curly z of xy minus j cap curly x of xz minus curly z of y square plus k cap curly x of xy minus curly y of y square. So it comes to be I cap. इसका curly y आ जाएगा 0 माइनस इसका भी 0 आ जाएगा. ओके, माइनस ऑफ j कैप इसका आ जाएगा आपके पास z माइनस ऑफ 0 प्लस k कैप. नो फॉर दिस वन इट विल बी y माइनस ऑफ 2y. तो ये रिजल्ट आ गया 0 I कैप माइनस ऑफ z j कैप माइनस ऑफ y k कैप. ठीक है. Now after this what we are require next, the next part is n cap. n cap क्या चीज है? बेसिकली डायरेक्शन है इस हेमिस्फीयर की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. ओके, now first of all we need to find the del phi. So given that surface is equal to phi of x y z, और वो आपके पास गिवन किया हुआ उन्होंने x square plus y square plus z square minus of 9. So that means first of all I need to find n vector that will be equal to del phi. That means curly x of x square plus y square plus z square minus of 9 plus curly y of with I cap x square plus y square plus z square minus of 9 j cap plus curly z of x square plus y square plus z square minus 9 k cap. So it comes to be 2x I cap plus 2y j cap plus 2z k cap, or I can say 2 common x I cap y j cap z k cap. That is the value of n vector. So n cap will be n vector over its magnitude, 2 into x I cap plus y j cap plus z k cap divided by magnitude of this part. So 2x का स्केयर हो जाएगा 4x स्केयर, 2y का हो जाएगा 4y स्केयर, 2z का हो जाएगा 4z स्केयर एंड रूट ऑफ इट. 4 सब में से कॉमन निकालना, 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट. सो इट विल बी एक्स आई कैप वाई जे कैप जी के कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर. और मुझे पता है कि एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की वैल्यू स्टेटमेंट में मैंने दी हुई है 9. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप divide by 9 root, that is 3. So resultant will be 1 by 3 times x I cap plus y j cap plus z k cap. अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, दोनों के अंदर डॉट प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, एज पर द स्टेटमेंट दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है. Therefore कर्ल ऑफ v डॉट n कैप, कर्ल v आपके पास जो आया था दैट वाज माइनस ऑफ z j cap minus of y k cap dot 1 by 3 x I cap y j cap z k cap. I know the value of I dot I1, j dot j1, k dot k1. So it counts to be 1 by 3 as it is, minus of yz j dot j1 minus of yz
k cap. Okay, so it comes to be minus 2yz by 3. तो ये आ गई कर्ल लेफ्ट डॉट एन कैप की वैल्यू. Now ds. So whenever we are taking a vector which is perpendicular to one of the axes, so basically its value will be dx dy over n cap dot k cap magnitude. So dx dy dot n cap, ये वैल्यू थी n cap की. So 1 by 3 x I cap y j cap z k cap dot k cap magnitude. So it will be dx dy over 1 by 3 I dot k0 j dot k0 k dot k1, so into z magnitude. So I can write this one 1 by 3 को मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 dx dy over z. तो ये टर्म बनी मेरे पास. अब ये सारी वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर. So equation star reduces to line integral along the curve C v dot dr, जिसको हम ds भी लिखते हैं, that is equal to minus 2 by 3 yz, that is the value of curl v dot n cap into ds into 3 by z dx dy over the surface integral. ये 3 और 3 कैंसिल, z और z कैंसिल आउट, सो माइनस 2 बाहर, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस s y dx and dy. ओके, नाउ दिस इज अ बेसिकली हेमिस्फीयर. तो उसकी प्रोजेक्शन जब हम लेंगे हेमिस्फीयर के अंदर, क्योंकि z एक्सिस 0 होता है. ओके, सो इन दैट केस वी विल ऑलवेज बी टेकिंग द वैल्यू ऑफ in xy plane. So hemisphere is x square plus y square is equal to 9. So that means y square is equal to ds वाला दोबारा समझाना. ओके बेटा, सो बेसिकली ds की वैल्यू है क्या चीज, ds इज बेसिकली द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन. ठीक है, तो अगर जो मैं ds को लेता हूँ इन xy प्लेन, तो ऊपर आएगा dx इंटू डी वाई ओवर एन कैप डॉट, जिसके परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे x और y लिया हुआ है, दैट मीन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस. ठीक है, जब z एक्सिस क्या होगा तो उसको रिप्रेजेंट कौन सा करता है, k कैप. अगर जो यहाँ पे मैं ds की वैल्यू लेता है dy इंटू dz ओवर एन कैप डॉट, कौन किसके परपेंडिकुलर है, x एक्सिस को, दैट मीन्स i कैप मैग्नीट्यूड. अगर जो मैं लेता हूं आपके पास dx एंड dz मतलब y के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आएगा n कैप डॉट j कैप. ठीक है, आपकी चॉइस है. मैं xy को रख रहा हूँ क्योंकि xy में क्वेश्चन रखना इजी रहता है. तो dx dy एज इट इज, n कैप की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऊपर निकाली थी, ये n कैप की वैल्यू थी, मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. ठीक है, और उसके बाद मैंने लिया k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट. सो i डॉट के 0 j डॉट के 0 k डॉट के 1, सो मैंने सिर्फ इसी को ले रहा हूँ k डॉट के 1. ठीक है, उसको सॉल्व किया और इवैल्यूएट किया. ओके, अब मैं लिमिट्स निकाल रहा हूँ. एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ एक्स स्केयर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स स्केयर. वाई की वैल्यू निकाली तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है. एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स एक्स वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3. तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे x माइनस 3 टू पॉजिटिव 3, y की वैल्यू माइनस रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर तक जाएगा. ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है. सो दैट विल बी द लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड कर्व C v डॉट dr, that will be equal to minus 2 minus 3 to 3 minus 9 minus of x square root to 9 minus of x square root into y dx dy and dx. ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 टू 3 y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट्स माइनस 9 टाइम माइनस 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से लेकर पॉजिटिव 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स। सो -2 और ये 2 भी बाहर निकालो 2, तो -3 to 3 अपर लिमिट दैट इज 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस माइनस का रूट लूंगा तभी वो पॉजिटिव रहेगा, 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों कैंसिल तो आंसर कितना आ गया 0, सो इट्स आंसर विल बी 0। ओके, दैट्स द रिजल्ट फॉर स्टोक्स थ्योरम। आई थिंक सो कंसेप्ट क्लियर है। यही टॉपिक्स बेटा ट्राई कर लो, ठीक है। वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं, मेथड यही रहेगा हमारा इसमें स्टोक्स के अंदर भी ये रहेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर भी ये रहेगा। हेमिस्फेयर नहीं हुआ तो सर्कल आ जाएगा, ठीक है, उसकी जगह कोन आ सकता है। दीज आर द पॉसिबल टर्म्स। कंटेंट यही रहेगा कि पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे पहले कर्व कर्व भी निकालना है, कर्व भी निकालने के बाद फाई को कंसिडर करना है, ठीक है। जो भी रिजल्ट फाई गिवन होगा फाई को कंसिडर करूंगा, फाई को कंसिडर करने के बाद एन वेक्टर को कंसिडर करूंगा, एन वेक्टर को निकालने के बाद एन कैप की वैल्यू, उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद मुझे ds कंसिडर करना है, ds कंसिडर करके उसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है, ये वैल्यू बस ds की निकली। ds की वैल्यू वैल्यूएट करने के बाद मुझे लिमिट्स निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ds को कंसिडर किया था इन टर्म्स ऑफ x एंड y प्लेन, तभी मैंने z को 0 पुट किया इसके लिए, ठीक है। अगर जो मैं dy dz लेता तो x को 0 पुट करता, और जो dx dz को लेता तो मतलब y को 0 पुट करना था, यहाँ पे x को 0 पुट करना था। रिस्पेक्टिवली देखना है मुझे कि मैं कौन सा सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ। v वेक्टर की, v वेक्टर तो बेटा स्टेटमेंट में ही गिवन है ना, v वेक्टर स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, सेंड कपूर सर प्लीज 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट। बेटा जो करवा रहा हूँ पहले इसको तो कर लो, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तीन थ्योरम्स है, तीन थ्योरम्स में से एक तो आनी आनी है, दैट इज 100% श्योर। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, तीन थ्योरम्स से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आती है। दोनों दो थ्योरम्स करवा दिए, दैट मीन्स इनमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। टॉपिक करवा रहा हूँ, नॉट द स्टेटमेंट मत कहना, ठीक है, कि सारी स्टेटमेंट नहीं कराई या स्टेटमेंट ये वाली करके याद करके चले जाओ। मैथड यू शुड बी अवेयर अबाउट द मैथड्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ओके, बेटा इंपॉर्टेंट ही है। Now, after this one, any other doubt? If you are facing any doubt in any topic, थ्योरम्स ही मैंने आपको थ्योरम्स करवा दी, ठीक है। और किस चीज़ में डाउट है बता दो मुझे, मैं वो टॉपिक आपको करवा दूंगा। आज कहोगे तो मैं आज लाइव क्लास अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन टेक ए लाइव क्लास टुमारो ऑल्सो। इस चैप्टर में से आप लोग फ्लक्स तैयार कर सकते हो, फ्लक्स इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, सोलिनॉइड, कंजर्वेटिव फील्ड, इसको रोटेशनल कहते हैं। आप इनको इनकी डेफिनेशन और इनके मेन मेन क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द मेन पार्ट्स इन दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट है तो कंटिन्यू कर लेते हैं हम, यू कैन गिव मी अ मैसेज, अदरवाइज वी कैन हैव वन मोर क्लास टुमारो। इफ यू रिक्वायर एनी, आई थिंक सो नोट्स मल्टीपल इंटाइल के मैंने सारे भेज दिए थे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ग्रेडियंट दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेडियंट किसी चीज का निकालना, यूनिट नॉर्मल निकालना, कर्व निकालना, डाइवर्जेंस निकालना, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स। ओके, टेंजेंट क्वेश्चन समझ लो। ओके, टेंजेंट इक्वेशन, tangent vector, I think tangent question, that means tangent vector. Okay, that is question number 7. At any point of the curve x equal to 3 times cos t, y is equal to 3 times sin t, z equal to 4t, find
Number one, tangent vector. Okay. Number two, unit tangent vector. So basically, first of all, we have, before calculating tangent vector, we should know what is position vector. That is always x I cap, y j cap, z k cap. That means 3 cos t I cap, 3 times sin t j cap, 4 t k cap. That is the value of r vector. Now when I'm talking about tangent vector, तो basically tangent vector होता क्या, derivative, first derivative of position vector. Tangent vector basically it is dr by dt and it is abbreviated as t vector. ठीक है, t vector को ही tangent vector कहते हैं. That will be equal to d by dt of 3 times cos of t I cap plus d by dt of 3 times sin t j cap plus d by dt of 4t k cap. So it will be minus 3 sin t I cap 3 times cos of t j cap plus 4 k cap. तो ये आपके पास टेंजेंट वेक्टर t वेक्टर निकल गया. Okay. Now the second part is unit tangent vector. So unit tangent vector is equal to t cap, that is equal to t vector over its magnitude, minus 3 sin t I cap plus 3 times cos of t j cap plus 4 k cap divided by magnitude, that is minus 3 sin t whole square plus 3 times cos t whole square plus 4 square and root of it. So it will be minus 3 sin t I cap plus 3 times cos of t j cap plus 4k cap divided by minus 3 square will be 9 sin square plus 9 cos square. तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ 9 plus 4 square will be 16 root 16 plus 9 25 25 का रूट आ गया 5 minus 3 by 5 sin t I cap plus 3 by 5 cos t j cap plus 4 by 5 k cap. That is your unit tangent vector. Okay. Anything else? That's it. तो टेंजेंट वेक्टर्स के अंदर बेटा मैंने आपको सारा बता दिया. ठीक है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, 2 मार्क्स क्वेश्चंस. दीज आर द बोर्ड क्वेश्चंस. ग्रेडियंट डाइवर्जेंस निकालना सबको आना चाहिए. ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्व और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स. ओके. तो ये पार्ट यूनिट नंबर 5 में से इंपॉर्टेंट था, मैंने जो बताया. Keep one thing in mind. You need to remember what is a rotational vectors, what are rotational vectors, what is a solenoid. These can be in 2 marks. Okay. Now the next topic, that is integral. We can discuss those questions tomorrow. Okay. Tomorrow I'll be sharing the time when I will be live. Okay. Anything else? That's it from my side. Do practice. I'll be sharing some notes, okay, for multiple integral today in the group. You can go through them. If there is any doubt, you can discuss it. Okay. On my number, you can text message over there. Lagrange's method. ओके. ये आ गया आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर Lagrange's method. बेटा कल ट्राई करते हैं. Lagrange's method इससे बिल्कुल डिफरेंट है. व्हाट आई कैन डू, कल या तो मल्टीपल कर लो या Lagrange's पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो. दोनों में से एक टॉपिक करवा दूंगा. So PDF is जो क्लास में करवाए थे. Okay, I'll be sending the PDF notes of multiple integral and
the things what we have done in the classes, live classes. Okay. Okay, then that's it for today.